Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life, with Dr. Mohammed Yousaf. We were discussing the male reproductive systems, and we discussed the physiological anatomy and the spermatogenesis in previous lecture. Today we'll talk about a few functions of the male accessory glands, prostate and seminal vesicles, and a few more things about the sperms and the semen, etc. But before that, one hadith, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया उन्होंने कि मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन व मा ज़ादल्लाहु बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा व मा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाहु। मा नक़सत, नहीं नुकसान करता, सदक़तिन, सदका, मिन मालिन, माल में से, सदक़े से माल में कोई कमी नहीं आती। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हमेशा बढ़ता है। अगर आपको तजर्बा हुआ उस ज़कात देने का, जब आप ज़कात जिस पर फ़र्ज़ हो जाती है, हर साल ज़कात ज़्यादा देनी पड़ती है, आपका माल बढ़ता रहता है। अगली फरमाए, दूसरी बात फरमाई, वमा ज़ादल्लाहु बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा, माफ़ कर देने से आदमी की इज्जत घटती नहीं है, बढ़ती है, अल्लाह बढ़ाता है। वमा ज़ादल्लाहु, और नहीं बढ़ाता अल्लाह, बिअफ़विन, माफ़ कर देने से, इल्ला इज़्ज़ा, सिवाय इज्जत के, यानी माफ़ करने से डेफिनेटली अल्लाह पाक इज़्ज़त को बढ़ाता है, उस बंदे की इज़्ज़त ज़्यादा होती है। वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाहु, और जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, इनकिसारी इख्तियार करता है, आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह के लिए, लिल्लाहि, अहदुन लिल्लाहि, अल्लाह के लिए तवाज़ा इनकिसारी करता है, रफ़अहुल्लाहु, अल्लाह उसको बुलंदी अता करता है। वो इनकिसारी करेगा, आजिज़ी करेगा, अल्लाह उसको बुलंद करेगा। तर्जमा एग्जैक्टली देख रहे हैं, ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। सदका से माल में कमी नहीं आती, माफ़ कर देने से आदमी नीचा नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसकी इज़्ज़त में इजाफा करता है। और जो बंदा अल्लाह के लिए तवाज़ो या इनकिसारी या आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसको सर बुलंद कर देता है। अल्लाह पाक इस बात की समझ दे और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। So we will talk about the accessory gland. What are two important accessory glands we are going to talk? Seminal vesicles and prostate glands. There are bulbourethral glands, other mucus secreting glands as well. Bulbourethral glands, it secretes alkaline. Alkalinity is important, and lubrication, mucoid secretion, mucus secreting glands. There are other glands as well, mucus secreting gland, but this is a bigger one. We will talk about seminal vesicle and prostatic secretions. The seminal vesicles, the name seminal vesicle, the vesicle of semen, this is misnomer. पहले पुराने ज़माने में कहते थे कि ये सीमन की यहाँ पे स्टोरेज होती है. This is part of the semen. It is not the whole semen. It secretes the secretion. It is a gland. It secretes. It is not storehouse. It is a gland. It secretes mucoid secretions which contain important ingredients. We will talk about the functions of those ingredients. One is fructose. Fructose is present. One sugar. This sugar is present. This is the nutrition for the sperms in the semen. Fructose and the citric acid, both are nutrition for the sperm. So nutrition provision, when after ejaculation, sperm need some nutrients. So these are the nutrients. This seminal vesicular secretion contains prostaglandins. Their function is, number one, these prostaglandins, they interact with the mucus in the cervix of the uterus. When during sexual act it is deposited into the vagina, these prostaglandins, they interact with the mucus in the neck, mouth of the uterus, and they make that mucus more receptive for the sperm, and the propagation of the sperm, entry of the sperm is more easy after this actions of the prostaglandins. Second function, and probably more important, is that is
these prostaglandins, they produce peristalsis in the fallopian tube. As in the previous lecture, we talked about that is sperm have to travel from all through the cavity of the uterus into the fallopian tube to the ovarian end of the fallopian tube. So this prostaglandin, they provide reverse peristalsis in the fallopian tube. वैसे तो उनकी peristalsis is from the ovarian and ampulla of the fallopian tube toward the uterus. ऐसे होती है उसकी peristalsis. But these prostaglandins, they produce reverse peristalsis. That is, they cause the propagation of anything in the fallopian tube toward the ovaries. Ovary की तरफ लेके जाते हैं. And that causes that helps the propagation of the sperm toward the destiny, toward the ampulla of the fallopian tube where fertilization will take place. So these are the two important functions of the prostaglandin. These two are nutrition and then. Another very important component of the seminal vesicular secretion is fibrinogen. Fibrinogen you must have studied in your blood. Fibrinogen is the protein which is responsible for clotting of blood. Clotting is this fibrinogen. It is converted into fibrin monomer and then they polymerize to form the fibrin meshwork, and that is clot. This fibrinogen here by some enzymes, and those enzymes are provided by the secretion of the second gland, prostate gland. Uski. So this will be converted into clot. This will be converted into fibrin meshwork, and this clotting of the semen in the vagina is responsible for the holding of the semen inside the vagina. So ये clot करती है. Then it will dissolve. आगे हम बात करते हैं dissolve कैसे होती है. So these important constituents, two of them are the nutrients, then this prostaglandins, and then the fibrinogen. All these contents of the seminal vesicle, the secretion of the seminal vesicle, they are added to the ejaculatory duct as we discussed in the previous lecture as well, along with the vas deferens. Vas deferens के contents और ये तकरीबन साथ they are added during ejaculation. They are added into the ejaculatory duct, and this adds to the total volume of the semen, bulk of the semen, 60% volume. टोटल वॉल्यूम में से 60% ये सेमिनल वेजिकुलर सिक्रेशन है. शायद इसी का नाम इसलिए स्टोर हाउस उन्होंने समझ लिया था, शुरू वाले साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा हुआ है सेमिनल वेजिकल. अभी तक ये कंटिन्यू. सेकंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड, सो इसको दोबारा देख लें. दैट इज द टू न्यूट्रिशंस एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड दिस फाइब्रिनोजन, एंड द टोटल बल्क इज 60%. प्रोस्टेट ग्लैंड, इट सिक्रीट्स alkaline, milky white, इसका कलर भी milky white fluid है, milky white alkaline fluid. This alkalinity is important. This prostate gland provides alkalinity because in the vas deferens the contents are acidic, or acidic medium में sperm they don't exhibit motility. They need alkaline medium. Alkalinity चाहिए. This alkalinity is provided by the prostate gland. इसलिए prostatic, अगर किसी मर्द में प्रोस्टेट को रिमूव कर दिया जाए तो वो इनफर्टाइल हो जाता है. इनफर्टाइल इसलिए हो जाता है कि अगर उसका सीमन बाकी कांट, ऑफ कोर्स प्रोस्टेटिक सिक्रेशन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है उस सीमन का, लेकिन इट हैज टू प्रोवाइड द अल्कलिनिटी एज वेल. सो द अल्कलाइन फ्लूइड is produced by this, and which contains contents. उसके contents हमने देखे थे seminal vesicle के. This contains calcium. This calcium is responsible for the flagellar movement. आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल इंटरैक्ट आपने सीलिया में या flagellar movement में पढ़ा होगा. Calcium is responsible for the so this calcium is helpful for the flagellated movement of the sperms. And then citrate ions are there, and then there are the phosphate ions. All they are ionic. They contribute toward the this clotting system, etc. हम देखेंगे. So citrate ions and clotting enzymes, which is responsible for the conversion of that fibrinogen from the seminal vesicle into fibrin monomer, clot करने के लिए. फिर अगली जो खोलने लगा हूँ, that is important. This is clotting enzyme, anti-clotting enzyme, profibrinolysin, which causes the lysis of the fibrin. वो क्लॉट जो बना हुआ है उसको डाइजेस्ट करती है आफ्टर 15 मिनट्स अबाउट. पहले क्लॉट बनता है वो फिब्रिनोजन, एंड फिर इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन
Profibrinolysin is converted into fibrinolysin, which causes the dissolution, digestion of that fibrin threads. तो वो फिर free हो जाते हैं, the sperm to swim. So profibrinolysin. So these important contents and their functions हमने एक एक नाम लिया. Capsule of this prostate gland is covered by the capsule. आप प्रोस्टेटेक्टमी जब करेंगे, जब सर्जरी ऑपरेशन जब आप करेंगे into this prostate removal का ऑपरेशन जब करेंगे, then you will see you will remove the gland from the prostate. कैप्सूल के अंदर से gland को remove कर देते हैं. This gland contracts along with the vas deferens to add the contents into the ejaculatory duct into the urethra during ejaculation. And this also contributes toward the total volume of the semen, bulk of the semen 30%. वो 60% प्रोवाइड करता है, ये 30% प्रोवाइड करता है बल्क ऑफ द सीमन. दिस अल्कलिनिटी जो पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, दैट इज अल्कलिनिटी न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक कंटेंट्स ऑफ द सीमन. इसको न्यूट्रलाइज करता है एंड इट brings the pH to alkaline level. The secretion, vaginal secretions are also acidic. Not only the secretion of the vas deferens, they are acidic. विजाना की भी सिक्रेशन भी एसिडिक होती हैं, उनकी भी pH 3.5 to 4 होती है, वेरी एसिडिक. उसको भी न्यूट्रलाइज करना है. सो दिस अल्कलिनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेल जेनिटल ट्रैक्ट की भी एसिडिटी ख़त्म करने के लिए, अल्कलाइन करने के लिए, और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की भी दिस सिक्रेशन 3.5, दिस इज एसिडिक. इसको कन्वर्ट करना है. अब सीमन को देख लें, जो ओवरऑल जो सीमन है उसकी पीएच कितनी है, क्या 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 काम करती है. सो कंटेंट्स ऑफ दिस टोटल वॉल्यूम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. वास डिफरेंस, कंटेंट्स ऑफ द वास डिफरेंस जिसमें ज़्यादातर वही हैं, स्पर्म्स हैं, एपिडिडमस से वास डिफरेंस में आए हुए 10%. एंड 60% हमने सेमिनल वेजिकल अभी पढ़ के आए हैं. एंड दी प्रोस्टेटिक सिक्रेशन दे कंट्रीब्यूट टू 30%. ये 100% हो गया, इतना ये सीमन हो गया. pH is 7.5. Now you can see this is alkaline. This is 7.5 pH. This is alkaline. Enzyme in prostatic fluid, वो fibrinolysin and clotting enzyme. Clotting enzyme in the prostatic fluid causes the clot formation from the fibrinogen coming from the seminal vesicle. उसको clot कर देती है and this clot profibrinolysin उसको dissolve करती है after 15 minutes. So it is converted into fibrinolysin. It causes the digestion, dissolution of that clot. And sperms are fertile. ये भी हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे हैं. After ejaculation, sperm की life होती है 1 day or 2 days, 24 to 48 hours. इसके अंदर they have to reach the fertile ovum तक पहुंचना है. उसका भी fertility period होता है, उसका थोड़ा होता है, only 24 hours तक होता है. उसके अंदर दे हैव टू रीच. दोनों का फर्टिलिटी पीरियड ओवरलैप करेगा, देन फर्टिलाइजेशन विल बी पॉसिबल. अगर ओवम पहले शेड हो गया, उसके 24 आवर्स से ज़्यादा गुजर गए हैं, ये स्पर्म पहुंच जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. ओवम वाइबल है लेकिन स्पर्म को 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम गुजर गया है, फर्टिलाइजेशन. सो बोथ द फर्टिलिटी पीरियड ऑफ द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट मस्ट ओवरलैप, तब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगी. So this sperms can be stored for quite long time. ऐसे करते हैं. There are stores बनाए हुए हैं साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ लैब्स में. The sperms of different people have been stored. They can be stored for quite long time, for years. कहते हैं 100 years तक भी कर सकते हैं. इतने लो टेम्परेचर पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर सकते हैं. और उसको दोबारा उम्मीद है कि वो अगर उनको दोबारा करेंगे तो दे विल बी एक्टिव, दे विल बी लाइव. सो सीमन के मुतालिक ये फिजियोलॉजी. एक फिनोमेना कैपेसिटेशन को पढ़ लें. व्हाट इज कैपेसिटेशन? आफ्टर इजैकुलेशन मल्टीपल चेंजेस दे कॉज द स्पर्म टू बिकम मोटाइल एंड फर्टाइल. पहले हमने कहा कि ना वास डिफरेंस से जब वो निकलेंगे इजैकुलेशन के बाद दे विल गेन द मोटे, दे विल एग्जिबिट द मोटिलिटी. दे हैड गेन द मोटिलिटी बट दे डिडंट एग्जिबिट ड्यूरिंग स्टोरेज. ये प्रोसेस क्या होता है कैपेसिटेशन में? व्हेन दे वर स्टोर्ड इन द वास डिफरेंस, there were some inhibitors which don't allow the flagellar movement, plus acidity तो हमने बात की हुई है. तो this capacitation, there are multiple factors which cause this motility. Uterine and fallopian tube secretion wash away the inhibitors. जब वो डिपॉजिट होते हैं, कैपेसिटेशन कैसे हो रही है?
there were many inhibitors of the flagellar movement. तो जब इनमें they are deposited into uterine cavity, into the vagina, into the fallopian tube, उनकी काफ़ी secretions हैं, उनको dilute कर देते हैं या wash away कर देते हैं inhibitors, तो flagellar movement possible हो जाती है. And in male genital tract, constant flow of supply of the floating vesicle from the seminiferous tubule containing cholesterol for keeping the acrosome tough. ये क्या मतलब है? जब तक स्टोर थे ना सेमिनल वेजिकल से कोलेस्ट्रोल के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से टेस्टिस से कोलेस्ट्रोल के वेजिकल फ्लोट करके आते हैं इनटू द एपिडिडमस इनटू द वास डिफरेंस. कोलेस्ट्रोल यू नो द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. वो कोलेस्ट्रोल वहाँ से तैयार होके आते हैं. दे are incorporated, they are installed, they become the part of the cell membrane, especially acrosome, that remains tough. जब तक कोलेस्ट्रॉल सप्लाई होती रहती है तो that membrane remains tough and acrosomal enzyme बाहर नहीं निकलते, वो hyaluronidase और proteolytic enzyme. लेकिन जब ejaculate हो गया है तो वो फ्लोटिंग वेजिकल्स कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग वो खत्म. नो सच सप्लाई आफ्टर इजैकुलेशन. वो तो वहाँ से तो कनेक्शन कट गया. सो देयर इज नो सप्लाई ऑफ दैट. सो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन बिकम मोर फ्रेजाइल और एक्रोसोमल एंजाइम निकल सकेंगे तो प्रोपेगेशन विल बी पॉसिबल. ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन. So calcium in the semen helps the flagellar movement. ये पहले भी बात कर रहे हैं. This is the part of the also that capacitation motility कैसे हो रही है. Acrosomal reaction भी हो रहा है और ये flagellar movement calcium ion की interaction between those 11 microtubule जो हम बात करें. This will cause the flagellar movement. This process is known as this gain in motility acrosomal reaction. आगे हम acrosomal reaction को और डिटेल में भी बात करेंगे. This is capacitation. So release of acrosomal enzyme help the digging their pathway. ये जो floating vesicle खत्म हो गए, acrosomal membrane becomes fragile and there is liberation of enzymes. Those enzymes they disperse the cells and they dig their way toward the destiny, toward the ovum. Now acrosomal reactions. हम आगे देखेंगे total number of sperms. Millions of sperms are required. बहुत ज़्यादा स्पर्म चाहिए होते हैं. हालांकि फॉर फर्टिलाइजेशन ओनली वन स्पर्म इज रिक्वायर्ड. आफ्टर एंट्री ऑफ द वन स्पर्म वो फिर और स्पर्म जा ही नहीं सकते उसके अंदर. उसकी बात हम अभी करते हैं. तो कलेक्टिवली एक्रोसोमल सारे एक्रोसोम मिलकर उसको डिस्पर्स कर रहे हैं. एक्रोसोमल रिएक्शन इसको कहते हैं. किस काम के लिए? दे ट्रैवल थ्रू दी स्पर्म हैव टू ट्रैवल थ्रू द फीमेल ट्रैक्ट अप टू द एम्पुला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब. ओवेरियन एंड ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब तक जाना है, इसलिए उन्होंने दे हैव टू डिग देयर वे. वो भी खाली तो नहीं है, उसमें फ्लूइड है, म्यूकस है, उसमें और सेल्स पड़े हुए हैं. ओवम के अराउंड मैनी सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, कोरोना रेडिएटा सेल्स उनको कहते हैं, दे आर देयर. तो डिस्पर्सल्स ऑफ दीज ग्रेनुलोसा सेल्स, कोरोना रेडिएटा सेल्स, उनको हटाना होता है. एंड द पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम बाय द स्पर्म, ये कौन कर रहा है? एक्रोसोमल एंजाइम कर रही है. एक्रोसोमल रिएक्शन की बात कर रहे हैं. दोज हाइलोरानिडेजेज एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम, they are causing the dispersal and digestion of the any material and they help the penetration of the ovum by the sperm. The sperm and hyaluronidase acrosomal digest the intracellular cement having the hyaluronic acid and proteolytic enzyme. They digest the structural elements of the cell. जहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करेगा और इंटरसेलुलर सब्सटेंस को वो डाइजेस्ट करेगा. एट द ये रास्ता बनता जाएगा. स्पर्म विल रीच द ओवम. And membrane of the sperm, membrane of the sperm, this combines with the specific receptor in the zona pellucida. As you know, ovum is surrounded by that tough membrane जिसको zona pellucida कहते हैं. So the sperm membrane this joins the zona pellucida. Membrane sperm combines with the specific receptor in the zona pellucida. उसके साथ जब मिलती है and acrosomal membrane dissolves and all the enzymes are released. ये जो स्पर्म उधर जाके लगा है वहाँ पे एक्रोसोमल एंजाइम ने वहाँ पे सुराख कर दिया, डाइजेस्ट किया उसने. इस एक स्पर्म जो पहला वाला पहुँचा है उधर जो पहुँचा है, पहले से सारे स्पर्म मिल के इसको यहाँ तक एक स्पर्म को यहाँ पहुँचाया. व्हेन वन स्पर्म रीचेस देयर तो उसके साथ मिल के एक्रोसोमल मेम्ब्रेन डिसॉल्व्ड एंड ऑल द एंजाइम्स दे आर लिबरेटेड. तो वहाँ पे एंजाइम मेक एन ओपनिंग इन दी जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा में सुराख कर देंगे. एंड द हेड ऑफ द स्पर्म, हेड में क्या है?
जो क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे पड़े हुए हैं. तो दिस हेड विल एंटर इनटू इट एंड टेल इज लेफ्ट बिहाइंड. अब उसका काम, टेल का काम सिर्फ उसको वहाँ पे पहुँचाना था. पहुँचाना न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए पहुँचाना है, हमने क्रोमोसोम्स को पहुँचाना है. तो द एंट्री ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म, membrane covering the head fuses with the ovum cell membrane. Head is covered by the cell membrane. ये cell membrane become the part of the ovum cell membrane और nuclear material is pushed in. वो अंदर चला जाता है और membrane इसका part बन जाती है. So nucleus enters into the ovum. This is fertilization. Nucleus has entered into the ovum. So 23 ओवम में भी 23 पेयर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है और 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म ने प्रोवाइड कर दिए. नाउ दे आर पेयर्ड. सो 23 पेयर्ड क्रोमोसोम्स, अब 46 क्रोमोसोम बन गए. 23 फ्रॉम द स्पर्म एंड 23 फ्रॉम द ओवम. तो 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम है, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं. दिस फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड. नाउ दिस व्हेन वन स्पर्म रीचेस देयर, millions of sperms are there, thousands may reach there. वहाँ तो 1000 तो पहुँच ही जाएंगे ना मिलियंस में से. लेकिन एक स्पर्म दाखिल होने के बाद इट बिकम्स इम्परमिएबल, इम्पेनिट्रेटेबल, उसमें नहीं जा सकता, कोई और दूसरा स्पर्म दाखिल नहीं हो सकता. एंट्री ऑफ ओनली वन स्पर्म ओनली. इसका मैकेनिज्म क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ फर्स्ट स्पर्म, जब ये दाखिल हो गया, फर्टिलाइजर दिस न्यूक्लियस अंदर दाखिल हो गया, देर इज डिफ्यूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस आउट ऑफ दिस ओवम. ओवम में जब हेड दाखिल हो गया उसका पहला, तो उसकी वजह से देर इज रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैल्शियम इनटू द सराउंडिंग जोना पेलिसुडा. उसके जोना पेलिसुडा में कैल्शियम आयंस लीक करते हैं, लार्ज नंबर, डिफ्यूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस एंड एक्सोसाइटोसिस ऑफ सेवरल कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. ओवम के अंदर ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, वो भी बाहर निकलते हैं. एंड दे कवर दी व्हाट इज टर्म एज दी पेरीविटलाइन स्पेस. जोना पेलिसुडा के जो स्पेस है उसके अंदर ये फिल हो जाते हैं. कैल्शियम आयंस एंड दी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के सब्सटेंसेस वो क्या करते हैं? दीज ग्रेन्यूल्स कंटेन सब्सटेंसेस टू डिफ्यूज इनटू द मेश वर्क ऑफ द जोना पेलिसुडा. जोना पेलिसुडा के ये जो ग्रेन्यूल के अंदर जो केमिकल्स हैं, जोना पेलिसुडा के जो मेश वर्क है उसको फिल कर देते हैं. एंड दिस फिलिंग विद दिस जोना पेलिसुडा मेक्स इट रिपल्सिव. एनी न्यू स्पर्म उसको करीब आने नहीं देता, ये मेश वर्क बंद कर देता है. जो भी स्पर्म इसके पास आता है दैट इज रिपल्सिव फॉर मोर स्पर्म. तो एक स्पर्म के दाखिले के बाद बाकी स्पर्म दाखिल नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ कैल्शियम एंड दीज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर निकल के जोना पेलिसुडा को फिल कर देते हैं. तो दूसरा स्पर्म दाखिल नहीं हो सकता. So that is how the fertilization takes place. Only one sperm causes the fertilization. Abnormal spermatogenesis. What is that? अगर sperms खराब बन रहे हों किसी वजह से क्या होगा? Infertility होगी. Infertility का most common cause, abnormal spermatogenesis का most common cause in males is post-mumps architis or archiditis. Mumps किसको कहते हैं? Parotitis. यहाँ पे हमारी इनको में उसको क्या कहते हैं पता नहीं, पश्तो वाले क्या कहते हैं, हमारी इनको में उसको कंतड़े कहते हैं. इट इज़ पेराटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैराटिड ग्लैंड्स. पैराटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन का इसके साथ क्या ताल्लुक है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सम एंटीबॉडीज. दोज एंटीबॉडीज दे कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस. बहुत से बच्चों को आपको एक्सपीरियंस होगा इन योर क्लिनिकल लाइफ कि उनको जब मम्स होते हैं, मम्स कहते हैं उनको, मम्स जब होते हैं, पोप्स मम्स आर्काइटिस होती है, उसके बाद उनको टेस्टिकुलर पेन शुरू हो जाते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस secondary effect of this architis, this causes the inflammation in the testis and that may cause the degeneration of the germinal epithelium. Testis का in the scrotum में होने का मकसद यह है कि temperature in the scrotum is lower than the temperature in the abdomen. कोर टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है. ये कोल्ड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर स्पर्मेटोगोनिया, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस. तो अगर ये इन्फ्लेमेशन हो गई है, देयर विल बी मोर टेम्परेचर.
So there may be inflammation and more temperature. There may be some stricture or degeneration of the germinal epithelium. और जब ये काम होगा, then the sperm cells may not be formed. Proper spermatogenesis may not take place. This is very common cause of male infertility. Male जिनके बच्चे नहीं होते, जिनके sperm count low हो जाता है, बहुत common cause इसका postmam architis होता है. एक्सेसिव टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, किसी वजह से भी हो, ये इन्फ्लेमेशन में भी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है. दिस विल कॉज द डीजनरेशन ऑफ द दिस germinal epithelium. Crypt architism is a condition in which testes don't descend. Testes are formed in the lumbar region. Genital ridge in the lumbar region. Embryology में आपने पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे. That is, testes, they develop from the genital ridge in the lumbar region. In last trimester, third trimester of the pregnancy, male baby के testes, they descend through the inguinal canal into the scrotum. इनको इतना लंबा सफ़र करना होता है from the lumbar region into the scrotum. अगर there is some blockage there, ये लंबा सफ़र है from the lumbar region into the scrotum. If there is some blockage there, the testes may be remain in the abdomen, और abdomen का temperature is higher than the scrotum. तो अगर abdomen में testes रह गए हैं और वो puberty तक पहुंच गया है, there is chances of degeneration of the germinal epithelium in the seminiferous tubule, और ये infertile होगा. Crypt architism is undescended testes. Testes, they descend into the scrotum in the last part of the pregnancy, third trimester of the pregnancy में ये descend. अगर ये descend ना करे, इसको crypt architism कहते हैं. अगर ये undescended testes रहेंगे abdomen में, that person will be infertile because the germinal epithelium is destroyed by the excessive temperature. ये excessive temperature है, core temperature जो normal temperature है, this is more for the germinal epithelium. So effect of temperature की बात की, increased temperature in the testis causes degeneration of the germinal epithelium and it will lead to infertility. इनके बच्चे नहीं. So temperature in the scrotum is 2 degrees centigrade lower than the core temperature of the body. कम होता है बाकी temperature से. So crypt architism leads to increased temperature in around the testis. They are present in that testis and that causes degeneration of germinal epithelium and infertility. So एक common cause of the infertility in male ये होता है. Crypt architism may be due to, हाँ ये किस वजह से होता है? एक तो मैंने कहा ना कोई ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, वो तो एनाटॉमिकल है, कोई टिश्यू दरमियान में आगे नहीं आए. टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसेंट. मेल हार्मोन, हम नेक्स्ट लेक्चर में टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन डिस्कस करेंगे. टेस्टोस्टेरोन इंट्रायूट्राइन लाइफ में उसका एक फंक्शन दिस डिसेंट ऑफ द टेस्टिस भी है. तो एक काज तो ये हो सकता है सम ऑब्स्ट्रक्शन, एक ये हो सकता है, या दूसरा काज ये हो सकता है डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ. ये दोनों बातें हो सकती हैं. तो क्रिप्ट आर्काइडिज्म मे बी द काज ऑफ द इनफर्टिलिटी इन मेल. तो आखिरी स्लाइड, 2 स्लाइडें हम ये देख लेते हैं. स्पर्म काउंट की बात कर लेते हैं. कितना होते हैं स्पर्म काउंट सीमन में? Volume of the semen per ejaculate is about 2 ml, 3 ml, 3.5 ml is the average volume of the semen. और इसमें एवरेज स्पर्म काउंट पर ml is 120 मिलियन. 1 मिलीलीटर में 120 मिलियन स्पर्म्स आर देयर. ये नॉर्मल काउंट है. ये 120 मिलियन एवरेज है, ये एवरेज लिखा हुआ है. बट द काउंट मे बी अप टू 200 मिलियन. ये 120 एवरेज है ना. इट नॉर्मल रेंज इज 35 to 200 मिलियन. 35 मिलियन पर ml से ज़्यादा होने चाहिए और 200 मिलियन तक तो होते हैं. तो इतना हाई काउंट इज रिक्वायर्ड. अगर किसी बंदे में काउंट इज लेस देन 20 मिलियन, 20 मिलियन पर ml अगर किसी में स्पर्म हो, दैट पर्सन इज डेफिनेटली इनफर्टाइल. इनके बच्चे नहीं होते. इतना हाई काउंट चाहिए. 20 मिलियन मौजूद हैं, स्पर्म एक चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन 20 मिलियन इतना हाई काउंट इस चाहिए. इनके सारे मिलकर एक्रोसोमल रिएक्शन करते हैं, तो इनफर्टिलिटी होती है इन लोगों में. अगर काउंट इज लोअर देन 35 मिलियन एटलीस्ट होना चाहिए. 35 तक उससे नीचे नहीं होना चाहिए. तो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ द, तो दिस इज द काउंट. अगर कम होगा तो इनफर्टिलिटी हो सकती है. एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, शेप, एनाटमी ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म को हमने देखा है वो भी
मोटिलिटी अगर कम होगी वो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे पहले भी मैंने प्रीवियस किसी लेक्चर में बोला था, दैट इज मोटिलिटी। सो द एबनॉर्मल शेप एंड मोटिलिटी, ये देखें नॉर्मल स्पर्म, ये डबल हेडेड स्पर्म, डबल टेल स्पर्म और स्मॉल हेड, और ये कॉइल स्पर्म एट्सेट्रा, ये सारे एबनॉर्मल स्पर्म है। अगर एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा होते जाएंगे फर्टिलिटी विल बी रिड्यूस्ड। तो हेयर वी एंड हमारा लेक्चर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। हम अगला लेक्चर इस पे करेंगे इंशाल्लाह ताला, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑफ एक्चुअल फिजियोलॉजी, हम हार्मोनल फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। वही बात आखिर में कि अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लें, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करें कि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा कर सकें। सब्सक्राइब करें ताकि वो बाकी वीडियो आसानी से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, होप टू सी इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। Thank you.